Hi friends, so today I will let you know how we can install the Windows 10 11 Pro in Oracle VirtualBox. So चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए. Let's go to open the Oracle VirtualBox. Okay, so I will install Windows 11 ISO image in this Oracle VirtualBox. This is we can use for testing environment for the testing purpose. If you want to install, if you want to do any testing for any machines like in Windows 11, you want to join in the job, and if you want to create any guest OS VM, so then you can create in the Oracle virtual machine. Okay, this will be help you to uh, you know no need to invest the money your physical servers, physical desktop machine or physical laptop, because if you want to install the Oracle Windows machine to physical uh, machines, so that will be reserved for that particular OS. Okay, so we can use Oracle VirtualBox and we can install Windows machine in the VirtualBox. So this will help we कि वे हम उस मशीन को यूटिलाइज कर सकते हैं और टेस्टिंग इन्वायरमेंट से हम अपना मनी भी सेव कर सकते हैं. So that will be scenario we can use Oracle VirtualBox and we can install Windows 10 or any Windows in the Oracle VirtualBox. So let's go to click on new. Okay, so let's type Windows 10. So हम Windows 10 Pro इंस्टॉल करने जा रहे हैं. देन यू कैन मैंने Windows 11 9 टाइप किया है. हमें फोल्डर सेलेक्ट करना है. ओके, सो मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे. लाइक फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ Windows 10 Pro. ओके, सो इस फोल्डर में हमें Windows OS को इंस्टॉल करना है. ISO इमेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें ISO इमेज कहाँ से सेलेक्ट करना है. सो this is already, so we need to select others. Okay, download Windows 10 Pro. Okay, so हमने ISO image select कर लिया है. Then we need to skip or anything unwanted installation. अगर आपको कुछ इसमें से चेंज करना है, पासवर्ड सेट करना है, तो आप कर सकते हो. बट फॉर द टेस्टिंग एनवायरनमेंट मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूँ. हार्डवेयर में आपको क्या क्या कितना हार्डवेयर और रैम मेमोरी देना है, देन अकॉर्डिंगली यू कैन डू दैट. ओके, सो मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ. आई डोंट चेंज एनीथिंग इन दिस हार्डवेयर प्रोसेसर और रैम. ओके, देन गो टू हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क ऑल्सो मैं इसमें डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ. अभी आप इसको कम भी कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट. अगर आपको इंक्रीज करना है तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट देन यू कैन इंक्रीज. ओके, आप लेटर ऑन आप इंस्टॉल करने के बाद भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और इसको डिक्रीज और इंक्रीज भी कर सकते हो. ओके, सो देन क्लिक ऑन फिनिश. सो आप देख रहे हो कि विंडो 11 ऑलरेडी एडिड है. दैट इज पावर ऑफ विंडो 10 हमने प्रोफाइल क्रिएट किया है. सो देन वी वांट टू इंस्टॉल द विंडो 11 विंडो 10 प्रो सॉरी. ओके, सो देन क्लिक ऑन स्टार्ट. So it will take some time, not more than lots of time. ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल करने में. आप देख रहे हो कि जैसे कि स्टार्ट हो गया है विंडो 10 11. ओके, विंडो 10 स्टार्ट हो रहा है इंस्टॉलेशन के लिए. ओके, सो इट इज इंस्टॉलिंग, कमिंग द पॉपअप. ओके, सो हमें इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना है. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. जैसे कि आप सभी जानते हो कि विंडो इंस्टॉल कैसे करना है. नॉर्मली most of the users know that how to install the Windows. Okay, so this is the same process. We can install the Windows in hardware machines like physical machine में जैसे आप इंस्टॉल कर दो. This is the also same process. हमारे पास विंडो की की अभी नहीं है, so we don't skip. Okay, so same thing, same process हमें यहाँ पे भी फॉलो करना है OS इंस्टॉल करने के लिए. बट दिस इज ओनली लाइक फॉर VirtualBox.
सो हम वर्चुअली इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, वर्चुअली हम इसमें कोई हार्डवेयर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम हार्डवेयर रिजर्व नहीं कर रहे हैं. दिस इज द प्रोसेस फॉर वी कैन virtually install the window 10. Okay, so this is installing. Window installation has been started, so it will take maybe 5 to 10 minutes, maybe it's minimum 7 or 8 minutes. So let's wait until the installing. So till the time I will stop the video recording. Okay, once done I will restart again and follow the next process. Okay, so please wait till the time. So जैसा कि आप देख रहे हो, you want to see Windows 10 almost install हो गया है. It's getting for things ready. So let's wait for until it's done. Okay, so we are doing the initial setting. Click on yes. Keyboard. Click on yes. We don't need the second keyboard. Click on escape. Okay, we are doing the initial setting for the Windows 10 Pro. This is for Oracle VirtualBox. So almost done. The initial settings is still setting things up. So I think it will be come up within a minute. So let's. Okay, great. Thanks for your attention. So it will be. Okay, so finally we come up the setting what you want to use. If you want to use for the testing purpose for the organization, so you can select the setup the organization, and if you want to select use the personal, okay, so you can use this the personal setting. Okay, so for now we set up for the personal use. Click on next. So here is the you can you need to put the email ID for Microsoft email ID. अगर आपके पास में Office 365 का email account है like hotmail.com और Microsoft email live.com, okay, so you can put there and that will be click on next. Second option we have like offline account. अगर आपके पास में ऑफलाइन अकाउंट ईमेल अकाउंट नहीं है तो आप ऑफलाइन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. ओके, okay, so we need to put the name, username, which you can put the any name, like I want to create admin. Okay, click on next. Password, any password which you required. 123 123. So this is the testing environment, so you can put the any name, your first word name, Libra. You need to put the questions. Second, your city, childhood nickname, April, any name which is you remember these names. Third question, your first school, global, GBS, G, global public school. Okay, so finally almost done. Just a moment. So we have almost installed the Windows 10 in Oracle VirtualBox. Okay, so browsing always exists, not now. Okay, so there's your final options. You want a location of as per your requirement. आप जैसे आप
any coding you can disable or enable. These are the settings. Okay. Okay, so finally, window has been installed in Oracle virtual machines. So this is the process we can install the window in Oracle VirtualBox. Okay, so if you need any testing environment machine, and if you want to create any uh, guest machine, so you want to share and they can access, okay, in your environment, so you can create your VirtualBox in Windows machines. Okay, so this is the process. So thank you so much for watching the video. So hope are you doing well, and please like and subscribe.